अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुबशर चौधरी और आप देख रहे हैं एमके स्मार्ट सॉल्यूशन। एमके स्मार्ट सॉल्यूशन is a domain of chemistry. Here our training program will clear your concepts from beginners to expert level. It means एमके स्मार्ट सॉल्यूशन का मकसद है कि हमने तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक टू मास्टर लेवल तक तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है और हर लेवल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा आसान और मददगार प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। चलिए अब देखते हैं आज का टॉपिक। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? The value of equilibrium constant is specific and remains constant at any particular temperature. The study of numerical value of equilibrium constant of a chemical reaction provides us information about the following concepts. Number 1, about the direction of reaction. Number 2, about the extent of reaction. देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने बहुत अच्छे से एनालाइज किया है, इसके यूनिट्स को हमने बहुत अच्छे से समझा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है वो बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है वो भी हमने बहुत अच्छे से समझा। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें बताता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। देखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें बताता है अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आइदर रिएक्शन मूव टुवर्ड द फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिएक्शन मूव टुवर्ड द रिवर्स डायरेक्शन, और एट लीस्ट इफ द इक्विलिब्रियम कंडीशन इज एस्टेब्लिश्ड देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेल अस अबाउट दैट। एंड द अदर साइड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो टेल अबाउट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट मतलब किस हद तक रिएक्शन पहुंच चुका है वो भी बताता है। So let's tell about the direction of reaction. It can predict at particular moment by using the reaction quotient QC, which is the ratio between the product toward the reactants. It is calculated at any particular moment before the reaction attains equilibrium. It predicts the direction of reaction by comparing the quotient value toward the constant value. I mean by comparing the reaction quotient value मतलब QC value with the equilibrium constant value toward the KC value. Thus there are following generalization or concepts. If the QC value is smaller than the KC, then the reaction goes toward the left to right as a forward direction. अगर QC की वैल्यू रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू स्मॉलर होती है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू, देन रिएक्शन मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. In another case, if the QC value is greater than the KC value, then reaction goes to right to left as a reverse direction. अगर QC की वैल्यू KC से ज्यादा है मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से ज्यादा है तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है. In another case, if QC value becomes equal to the KC value, then equilibrium condition is attained from the reaction. मतलब कि अगर reaction quotient की वैल्यू equilibrium constant वैल्यू के इक्वल हो जाती है, इसका मतलब है कि equilibrium की कंडीशन को अचीव कर लिया है रिएक्शन ने. अब बात करते हैं extent of reaction. मतलब कि equilibrium constant से हम कैसे measure कर सकते हैं कि रिएक्शन किस हद तक पहुंच चुका है. It can measure how far a reaction proceeds before establishing equilibrium state, as it is indicated to which extent reactants convert into the product. So, numerical value of Kc equilibrium constant predict the extent of reaction. There are three possibilities about this concept. Thus, there are following generalization or concepts according to the equilibrium constant value. If the Kc value is larger, it indicates the reaction has almost gone to completion, as it indicates the equilibrium position, as the reaction mixture contain all the product and reactants are in negligible amount. देखें, अगर तो Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ये जाहिर करता है कि रिएक्शन तकरीबन मुकम्मल होने वाला है, रिएक्शन तकरीबन इक्विलिब्रियम पोजीशन तक पहुंचने वाला है, या फिर ये भी बताता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कितनी रह गई है या कितनी इस्तेमाल हो चुकी है. In another case, if the smaller value of Kc, अगर equilibrium constant की वैल्यू छोटी हो, कम हो, then it indicates such type of reaction that never goes to completion. It also indicates that equilibrium position, as the reaction mixture contain all reactants and product are as negligible amount.
मतलब कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है, बहुत छोटी होती है, तो ये जाहिर करता है कि रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ मूव नहीं कर रहा, और ये भी बताता है कि क्या रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन कर ली है या नहीं। एज वेल एज ये भी बता रहा है कि ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन में बी लेफ्ट बिहाइंड एज कंपेयर टू नेग्लिजिबल और मोर। In the other case, if the value of Kc neither small nor large, ना ही Kc की वैल्यू छोटी है और ना ही ज्यादा है, it indicates the reaction has at the equilibrium position as having comparable amount of reactant and product। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन कर लिया है और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट कंपेरेबल है। उम्मीद करता हूँ हमारी ये मेहनत आपके लिए मददगार साबित हो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस तमाम कोर्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट mksmartsolution.blogspot.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे विजिट करें। यहाँ पे आपको आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम डाटा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिलेगा, फ्रॉम द मैट्रिक टू मास्टर लेवल। Thanks to watch. If you have any query, you can find me in comment box, or you can also contact me on WhatsApp. Khuda Hafiz.